Namaste, Sat Sri Akal, Kem Choka Sakai. Welcome back to my channel, The Insight Generator. Power up your data insights. So I'm again back with another videos. So in today's agendas, we will be covering this few features of the data transformations like fill up, fill down, and unpivoting. So चलो देखते हैं ये क्या होते हैं ये सारे फीचर्स क्या है डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में सो शुरू करने से पहले गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos you guys are not going to miss even a single updates. So first of all we have to go to the data transformations and it will take you directly to the Power Query editor which is a data transformation engine. तो सबसे पहले हमें fill up और fill down देखना होता है. तो ये fill up और fill down होता क्या है इसको समझते हैं पहले. अगर मैं fill up fill down में जाऊँ मैंने पहले से डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ रखा हुआ है. सो क्या होता है कुछ नल वैल्यूज आपको दिख रहा होगा कैटेगरी कॉलम में, right? So these option basically allows you to quickly populate the missing values in a column based on the values available in the adjacent cells. यानी ये जो null values है, right, ये quickly हम लोग populate कर सकते हैं based on the values available in the cell, right, to the adjacent cells. ये हमारा मान लो adjacent cells हमारा ये है furniture है. तो अगर मैं फिल डाउन करूंगा तो फिल डाउन में क्या होगा जो भी हमारे एम्प्टी जो सेल्स होते हैं उसके जस्ट इमीडिएटली अबव जो भी सेल में वैल्यूज अवेलेबल होते हैं लाइक लिए से फॉर एग्जांपल ये नल वैल्यूज है, इसके ऊपर भी ये भी नल वैल्यूज है, ये भी इसके ऊपर भी नल वैल्यूज है, लेकिन इस नल वैल्यूज के जस्ट इमीडिएटली ऊपर जो हमारा वैल्यूज है फर्नीचर्स, राइट, उसको पिक करता है और उस अवेलेबल वैल्यूज से इन सारे वैल्यूज को फिल कर देता है, ऑटो पॉपुलेट कर देता है फिल डाउन में, राइट. सेम थिंग हमारा फिल अप में होता है, लेकिन फिल अप में क्या होता है, फिल अप में जो हमारे एम्प्टी सेल्स होते हैं ना वो कौन से वैल्यूज को पिक करते हैं जो इमीडिएटली डाउन होते हैं, जो इमीडिएटली बिलो वैल्यूज होते हैं ना, अवेलेबल वैल्यूज होते हैं ना, उस वैल्यूज को पिक करता है. लाइक अगर मैं देखूं ये जो नल वैल्यूज है इसके जस्ट इमीडिएट बिलो भी नल वैल्यूज है, उसके नीचे भी नल वैल्यूज है, बट इस नल के जस्ट इमीडिएट बिलो जो हमारी वैल्यूज है ना सेल वैल्यूज वो है टेक्नोलॉजी. सो ये टेक्नोलॉजी को पिक करेगा एंड फिल अप में इसको ऑटो पॉपुलेट करेगा ऑल द वे फ्रॉम डाउन टू टॉप, राइट, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. सो बेसिकली यही फिल अप और फिल डाउन का काम होता है, राइट. तो चलो करके देखते हैं कैसे होता है. जब आप ट्रांसफॉर्म टैब में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है फिल का, राइट. सो यहाँ पे पहले हमें फिल डाउन करना है क्योंकि हमें ऊपर से फिल करना है, राइट. सो जो नल वैल्यूज है ये इमिडिएटली अबव वाले सेल में जो भी वैल्यूज होगा उसको पिक करके ऑटो पॉपुलेट कर देगा. तो हमारा फर्नीचर है तो ये तीनों वैल्यूज फर्नीचर से पॉपुलेट हो जाएंगे. अगर मैं इन नल वैल्यूज की बात करूँ तो इसके जस्ट अबव जो हमारे अवेलेबल वैल्यूज है इन द सेल में वो है ऑफिस सप्लाईज. सो ये ऑफिस सप्लाईज से सारे फिल्ड हो जाएंगे. सो व्हेन आई विल क्लिक फिल डाउन, so now your data is auto populated, right. So likewise we have to do the further fill up. So what is fill up I have already explained you. So in the same options you have to go and you have to choose a fill up. So your column will be, your null values will be auto populated, right. So this is what the fill down and fill up works. Now moving on to the unpivoting. What is unpivoting? So unpivoting के लिए सबसे पहले मैं एक डेटा लोड कर लेता हूँ यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में. So this is for unpivoting. I'll explain what is unpivoting and how does it work actually, right. So there is a survey data. Let me just extract this data. Okay. So you will see, I think header is, it is not promoted as a header, the first row. So let me first promote. I have already explained you in one of my videos how to promote the first row as a header, because here the header of the table is like column 1, column 2, column 3, and the table is not the well formatted in the way it has to be, right. So the first row has to be promoted as a header. So I am simply applying this. Now it is fine. Name, region, positions, domain, tenure, right. And we have few questions like I feel encouraged to come up with the new better ways. So likewise we have so many columns जहाँ पे feedbacks हैं like agree, neutral, agree. So ऐसे हमारे बहुत सारे almost हमारे पास 157 columns हैं
57 कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें से 1 2 3 4 5 कॉलम्स हमारे जेन्युइन कॉलम्स हैं, राइट। और जो हमारे 52 कॉलम्स हैं वो हमारे सिर्फ क्वेश्चनेयर है जिसके बेसिस पे लोगों ने अपना आंसर्स किए हुए, राइट। तो ऐसे हमारा जो टेबल है काफ़ी एक्सपैंड हो जा रहा है, लाइक देयर आर 57 कॉलम्स, आई डोंट थिंक इट इज़ वेल फॉर्मेटेड। सो इन इन्हीं इन्हीं इसी सॉल्यूशंस के साथ मैं इस वीडियो में आया हूँ कि ये अनपिवोटिंग होता क्या है बेसिकली, कैसे इस वाइड रेंज ऑफ टेबल्स को कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं कॉलम्स को। सो ये अनपिवोटिंग बेसिकली क्या होता है ना, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द मल्टीपल कॉलम्स एंड जस्ट कन्वर्टिंग देम इनटू टू कॉलम्स। जो दो कॉलम में कन्वर्ट करता है वो मल्टीपल कॉलम्स को, लाइक हमारे पास 52 कॉलम्स है क्वेश्चनर को, वो सारे 52 कॉलम्स दो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। उसमें से एक कॉलम जो होगा हमारा वो होगा एट्रीब्यूट के लिए, और जो दूसरा कॉलम होगा वो होगा हमारे लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के लिए। सो मैं आपको अभी लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कैसे ये 52 कॉलम्स हमारे दो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अनफी वोटिंग में हम बेसिकली यही करते हैं, जो हमारा वाइड रेंज ऑफ टेबल होता है ना वो सिर्फ दो कॉलम्स में क्रिएट हो जाता है। सो इफ आई विल स्टार्ट सेलेक्टिंग दिस कॉलम जिसको मैं अनपिवोट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अंडर द ट्रांसफॉर्म टैब हमारे एक ऑप्शन आता है अनपिवोट टेबल्स, तो हमें इन कॉलम्स को अनपिवोट करना है, राइट। सो इफ आई विल स्टार्ट सेलेक्टिंग देम one by one, one by one, one by one, one by one, it is going to take a lot of time, right? Because there are 52 columns I have to select. So this is not the right way of selecting this entire columns. I think this is a very unusual way and no one should follow this way, right? So what do we have to do in the Power BI? It is quite simple. Like when you will go on the unpivot tables and click on the drop down menus, you will see there is a options called unpivot the other columns. So you can do one thing. What is unpivot columns? If you will select this column and if you click the unpivot columns, it will only unpivot the selected columns, right? We have 52 columns that we have to unpivot it. So selecting it manually, it's quite difficult, right? And it will a tedious process. So we have to go with the second options, which is unpivot the other columns. So what is unpivot the other columns? Let me show you that. When you are selecting this one, I think selecting this five columns is quite easier than selecting those 52 columns, right? ये पांच columns को select करना काफी easy है. So now I am going to choose this unpivot the other columns. It means it is not going to unpivot the selected one. Apart from this selected columns, it is going to unpivot. So apart from this five, we have rest 52 columns. So when I will choose these options, so you will see we have now two columns. So those 52 columns now have been converted, have been transformed into the two columns. One column is dedicated to the attributes, right? That is the questionnaires that has been asked, and another one is their corresponding values. Like I feel encouraged to come up with a new and better ways of doing things, neutral, right? So there are so many questionnaires, right? And we have their corresponding answers. So we can change this like uh, questions, and this is their responses. So we can simply change the name of the column, right? So this is called unpivoting. I hope you guys are pretty much clear what is fill up, what is fill down, and what is unpivoting. I think unpivoting is really extensively used in the real one industries, because sometimes the table is not well formatted in the way it has to be, so you have to unpivot them and you have to convert them into the two columns, right? So thank you so much guys for watching my videos. Keep supporting me and I will again catch up with another videos. Thanks for watching my videos. Thank you so much.